So normal field here set in a T20 format. Two fielders behind the keeper. One in the short mid-wicket region. One at the backward of point. So Bhushan starting against Tushar. I felt as if Tukaram is going to take the strike. Now Bhushan is starting against Kedar. Very nicely played. Played against the spin, but very comfortably nudged it around the mid-wicket region for a single. So Kedar must be definitely having a thought about power play not being taken in the first over. So whether he is going to play a waiting approach or whether he is going to play the shots against this new tennis ball, which is very difficult to fly across for the sixes and boundaries. He goes for the switch hit. He saw the fielder was inside. He likes that switch hit. I've seen many a times in the big tournaments, not only here but also many good tournaments across Goa on big grounds. Hitting sixes almost 80, 90 meters with ease. Once again, this is very good bowling here. He's not bowling those leg cutters. He's bowling medium off cutters against the left hander. Smart piece of bowling. Kept that extra cover inside. Not easy to get the shots of tennis ball cricket in the extra cover region. This is very good bowling here. Slower ball. Waiting onto the back foot to cut that ball away. So smart start here from the smart bowler, Bhushan. Just a single so far. 3 dot balls against Kedar Zamaulikar. Maybe feeling little itchy here to get one big hit. This time also, this is a peel and he's back in the pavilion. This is an off-cutter. Somebody had to give it over here, and it is the Kedar with the pressure being piled upon him by the bowler, bowling those dot balls in perfect areas. He felt he had to go after him, and in return succumbs to the pressure. First wicket down at the score of 1. So not a good start here. In comes Babal Zore. Babal is an attacking player. He goes after the bowlers right from the start. Can he do that in quarterfinals like this one? Still lots of overs, lots of balls still left for the batters. He goes for the switch. It might be a chance. Oh, lovely effort. Dives in front with that left hand. Just falling short. Just the first ball. He goes for the switch hit. Likes the switch hit very much, just like Kedar Zamaulikar, and just lucky to be alive on this ground. 2 for 1 in 1. Great first over by Bhushan. Not only picking up the wickets, but just conceding 2 singles.
So the ends have changed. Maybe we might witness the same ends. The matches will be played in the later half and the sun goes down in the sea at the west side. So we might be playing some matches from one end itself. It's difficult sometimes as per Mohit and their organizers. When the sun is going down, it directly falls in the eyes of the batsman facing the sun. But not at this stage. It's going to be both ends here. This is very nicely played. It goes for the big one. Gets the big one. What a mighty heave. Man coming from Sangam and shining here in Sholem. Samir Gowde starts off and is welcome with a big six. Just the two on the board in the first over and six to start the proceedings from Babal Zore gets the score to 8. This time stand, just stand and play down the ground for another single. The Babal has to understand that these are 8-over matches. You have to take the game deep. Yes, I can understand if the ball is in the slot, if you feel that it's a short ball, full toss ball, give it a full go. But when the ball is not in your zone, just step it around for singles and the batters, the top order batter need to bat a sensible innings. Like Shubham Sherke has played in the previous game, the first batter to get a 50. And nicely played, a full length delivery. He missed it in the first ball, but he has corrected his length and line in the second and the third ball. So after getting the six, they are just rotating around with the singles, looking a very strong side in batting and bowling department, 8 strikers. So there must be thinking in the camp of Sai Samarth to get somewhere around 75 at least to put up a pressure on this batting unit. This is really good bowling. This was quicker. He was trying to go for the big one, just trying to shift the gears here. Second over. Ten on the board. He's bowling those off cutters. He wants to go for the quick single and gets the single in the short third man region. By signal here by umpire Sujit Rane. Sujit Rane and Raju Dabolkar officiating this match. Goes once again for the switch hit. Doesn't look comfortable to go for the switch hit. So in spite of giving a 6 of the first ball, he bowls a pretty decent over. Second over gone out of the race and is 11 for 1. दारबांदोडेचे सरपंच आणि एका बऱ्या क्रिकेट मोगी बालाजी गांवस एक बरे सोशल वर्कर आणि क्रिकेटी खातीर खूप अशें काम केल्ले दारबांदोड्या एक ग्राउंड जो आसा दारबांदोड्यात तांणी वयर स्तरार व्हेल्लो आसा आणि आज जे भुरगे आसा सावड्डे वाठारांतले दारबांदोडा वाठारांतले तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा संद मेळटा एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आणि भरपूरशे लेदर बॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेट आमकां पळोवपाक मेळटा म्हजो बरो मित्र आणि एक बरो क्रिकेटीचो मागपी बालाजी बाब तुमकां येवकार करता आमी ह्या व्हड असं मोठ्या दबाजाच्या टुर्नामेंटाक उज्वला तुकाराम चोपडेकर मेमोरियल ट्रॉफी ऑल इंडिया लेवल टुर्नामेंट येवकार बालाजी गांवस. So power play has been chosen here by the captain of the fielding side and maybe
the thought was Bhushan is having 1 over, so let's bowl that over when Bhushan is having that over. If Bhushan has bowled that over, it might be more pressure on other bowler to bowl in the 4th over. So maybe the right option chosen here by the captain to select the bowling power play. That's a good start. Well, wide ball signal here, but I feel when the left-hander comes, he bowls the off cutters. When the right-hander comes, he bowls the leg spinners. So he has got the tenacity and the talent and the ability to bowl according to the situation and the player. Goes for the switch hit, but the line was right. Missed by just a small distance. Very smart and calculative bowling here from Bhushan. He is a really, really good talent to be having in 8 strikers. Once again, going for the big heave. A little appeal, but not a convincing one. Just an outside thought put up here by the bowler. Umpire was unfazed. Score is on 12 at the moment. 3rd over in progress. A really good start in these bowling power play overs from Bhushan. So once again, this is really a good over. Bowling in the right areas. He's going for the same shot. Sometimes the switches, sometimes the orthodox lock shot in the mid-wicket region. Still the score is struck on 12. Now Tushar is having a word to Babal Zore. That's a lovely piece of bowling. Chance of a run out at the non-strikers and direct hit. Oh, this might be close. This might be really close. It was good fielding and the 3rd umpire has come into effect. So let's see. Not out. He has grounded and inside. So it was a close decision, but batsman certainly grounds it and grounds it inside the popping crease. So very good umpiring here. He knew that that was very, very close decision. So went for the review, went for the referral and went in favor of the batting side. But that was a close single. It was risky, but the pressure was piling on Babal Zore and he wanted to go at the non-striker's end. Score just moves on to 13. 1-6 so far in this innings from the bat of Babal Zore into the 3rd over. Once again, you can see he is bowling so well, but he is not been getting the fruitful results. He's trying to get the wickets and he's bowling in the right areas to get a wicket as well. Sometimes when you bowl full tosses, short balls, God gives you wickets. Sometimes you don't get a wicket off in spite of bowling a good over. That's how the cricket is. The batsman still surviving in spite of a class bowling act. This is in the air, but this time there is no fielder in the deep. Gets the boundary. It was slightly fuller. He waited for that and goes for the big one. That's even better than my thinking. From here it's very difficult, but goes for the 6 runs. The over which was turning out to be a good one. Finally, Samarth will feel comfortable and relaxed after the 6. At the end of 3, is 19 for 1. For 1.
in 3 overs. So wonderful hospitality here from the organizers of by Mohit Chopdekar and his team, getting and giving everyone what they want, especially the commentators, the umpires, the scorers, the live telecast. It's the best. I think it's the best environment created here by the organizers. Industrial fan has been put here. They understood that it's difficult here to give commentary and also to set your concentration right. This time trying to cut that, but there was no room given here. It was close to the body. So just gets a single. Bowling unit is very strong of 8 strikers. They managed to defend at a score that posted of 96 runs comfortably in the first match. And the batters have to be little better here, innovative as well sometimes. If you don't get your perspective right, you might be faltering into a deep hole in these quarterfinals. So far, it looks so good for 8 strikers. Once again, this is good keeping here, good footwork. Just bowling a dot ball. This was once again the batsman shuffling across, hoping that umpire is going to give it a wide. The wides are not going to come by easily. You have to storm yourself out of this into the deep hole that you have put yourself with the dot balls played. This is in the air, but he has timed it well. He has played it well, and he has landed the ball out of the fence. Magnificent switch hit here from Tushar Narvekar. Well, I told you, you got to be innovative, you got to be inventive. That what exactly Tushar has done over there. You cannot be predictable as far as the batsman is also concerned, just like the bowler. If you stay in the line, nicely played. Might be thinking of the second, but the fielding is really quick. They come quickly from the boundary line to inside the 30 yard, just restricts the batsman to a single. Takes the score to 27. The 4th over in progress so far after opener was lost in the first over itself on Golden Duck. These batters are slightly reconciling these innings. Once again, this is a nothing shot here. This was a quicker ball. No position whatsoever to play that shot in the mid-wicket region. Tushar is telling, don't be predictable with your footwork and don't give an indication very first up that I'm going to play that shot. Tushar has been a little better here. Babal has played a few dot balls. Once again, another dot ball here against Babal Zore name. Is struggling in this innings so far. Tushar is playing more sensibly and not giving too many dot balls. So 4th over, Shekhar, in spite of giving a 6, just concedes 8 runs in this over. At the halfway mark, is 27 for 1. It's going to be a little drinks break here, and it will be changing commentary as well over to Jay Bosley, and I will have my time out in for a wonderful lunch provided by the organizers. हेलो, धन्यवाद हरीश सर। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है फिर एक बार दोपहर के सत्र में। मुकाबला आप देख रहे हैं
एक स्ट्राइकर्स वर्सेस साई समर्थ के बीच में। टॉस जीता ये स्ट्राइकर्स टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 27 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट निकला केदार दमदार जांबो लेकर। केदार की दमदार बल्लेबाजी की अपेक्षा जताई जा रही थी, लेकिन केदार कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा ये स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब गेंदबाजी में शायद बदलाव नजर आएगा, नए गेंदबाज अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। संजय धनंजय ये गेंदबाजी के मोर्चे पर। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 27 रन ये हालात टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है और लगभग यहां से मैच को जीतना, आगे जाकर तो इतवार को इस मैदान पर फिर से दोबारा आना कौन किस टीम के नसीब में होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान को सिर्फ प्रयास करना है और अंजाम तो भगवान के हाथ में, नसीब के हाथ में, वक्त पर छोड़ा जाता है। देखना है ये बचे हुए 4 ओवर कितने रन बना पाएगी साई समर्थ की टीम। फुल टॉस गेंद, इस बार पहली गेंद मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए स्टैंड एंड डिलीवर। तुषार नार्वेकर के बल्ले से निकला एक शानदार छक्का, फुल टॉस गेंद और पहले ही तैयार थे इस गेंद के लिए। जिस तरह से गेंदबाजी ने तेजी गेंदबाजी डालने की कोशिश करी और उससे ज्यादा तेज बल्ला घुमा और सही मिला गेंद के ऊपर 6 रन का ठप्पा, टोटल 33, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ गेंद की गेंद फिर एक बार उसी दिशा में, बैक टू बैक सेकंड मैक्सिमम। बहुत थैंक यू। 2 बड़े शॉट 2 गेंदों के ऊपर वापसी करना चाह रही टीम। पहले 4 ओवर में रन बने नहीं, लेकिन इस ओवर में शायद ये 2 छक्के 4 रन का टेम्पो बढ़ाने के लिए कामयाबी। क्या होगा लेकर चलते फिर एक बार गेंदबाजी के लिए धनंजय स्वागत यहाँ इनका कर चुका है 2 गेंदों के साथ, 2 छक्कों के साथ तुषार नार्वेकर, बहुत ही शानदार। दूसरी तरफ से बाबल जोरे जो कि और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, ये जोड़ी कितने रन बना पाएगी ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग की सजावट, इस बार एक डीप में खिलाड़ी लगाया गया, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार चूक है। 2 गेंदों सीधे बल्ले के साथ खेले और 2 छक्के यहाँ पर लगाए, लेकिन ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक थोड़ा सा बल्लेबाज को दिक्कत में लाने वाला था, लेकिन शानदार वापसी। 2 छक्कों के बाद ये तीसरी बिंदी गेंद निकलती हुई धनंजय की। 39 रन पर टोटल पहुंचा, 39, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार, इस बार देखिए तेज भरी गेंद, यहाँ पर विकेट कीपर भी बीट हो गए, बल्लेबाज भी, रनआउट का मौका शायद और थ्रो हो सकता है, लेकिन तुरंत आए वहां पर कवर बैकअप, लेकिन आगे निकल चुके थे यहाँ पर बाबल। सिंगल 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन के साथ 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 4 ओवर में सिर्फ 27 रन खर्च करे, इस ओवर में 2 छक्के लगे हैं। अब व्हाट इज नेक्स्ट, अब यहाँ से देखना पड़ेगा समर्थ, साई समर्थ की क्या सोच है, कितने रन बना पाएंगे। नामदेव बानावलीकर का उनके टीम में समावेश हो चुका है और ये गेंदबाजी और मजबूत नजर आएगी साई समर्थ की, लेकिन उससे पहले बल्लेबाजी में रन उनको बनाने हैं। ओ इस बार शायद पूरी तरह से चकमा दे दिया, शायद अपील जोरदार कर रहे हैं अंपायर के पास, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली बिंदी, गेंद निकली डॉट। अच्छी गेंदबाजी, 2 छक्के, लेकिन उसके बाद वापसी करी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। और बल्लेबाज बाबल जोर इंतजार कर रहे हैं, उनके रडार में कब गेंद आ जाए और उसे कब नॉट रीचेबल करे, लेकिन गेंदबाज की वापसी हो चुके, लेकिन 2 छक्के क्या वो फायदेमंद साबित हो गए बल्लेबाजी करने वाली टीम को। ये काफी तेज रफ्तार वाली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ, 1 रन और खाते में, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। टोटल पहुंचा 41, 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप में इस हरे भरे मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं
उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और इस बार खेल दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री से गेंद निकल रही है। जब तक गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते, दो खिलाड़ी को चेरते हुए गेंद निकले, सीमारे का बाहर, 4 रन के लिए शानदार स्ट्रोक। टोटल पहुंचा रोहित शर्मा के जर्सी क्रमांक 45 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर शानदार रहा। इस ओवर में लगभग निकले 18 रन, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले हो रहा हमारे, अभी भी एक और वो बैटिंग पावर प्ले का अभी भी शेष है। शायद मैच में शायद 70-75 तक पहुंचने की तो कम से कम कोशिश रहेगी साइड समर्थ की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखना है। अब इशारा हमारे ओर आता हुआ, इट्स बैटिंग पावर प्ले, यानी कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के ओर से लिया गया हुआ ये है पावर प्ले का। आपको 35वें मिनट तक 7वां ओवर समाप्त करना है, 8वां ओवर 35वें मिनट तक आपको शुरू करना है, वरना आपको वो पेनल्टी, 2 फील्डर 1 फील्डर जो कि 30 यार्ड घेरे के अंदर जो कि पेनल्टी आपको दी जाएगी। गेंदबाजी में शेखर, ये गेंदबाजी पावर प्ले का ओवर, खुद के कोटे का दूसरा, सामना करेंगे स्ट्राइक पर तुषार नार्वेकर। 4 छक्के अब तक उनके बल्ले से। ये देखिए, घुटना टेक, तमाशा देख, बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश करी, गेंद सीधी ब्लॉक होल में डाली हुई थी। यॉर्कर लिंक की गेंद पूरी तरह से चकाते हुए विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं गेंदबाज शेखर, पूरी तरह से बल्लेबाज को सिंगल के साथ यहाँ पर अप स्ट्राइक पर आएंगे बाबल जोरे। टोटल पहुंचा इस सिंगल के साथ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच का अगर सूरत हाल यहाँ पर अगर बताया जाए तो निश्चित रूप से मैच में दोनों टीमें वापसी करना चाह रही है। एक अच्छा ओवर वापसी करेगी ये स्ट्राइकर्स की टीम, एक बड़ा ओवर मैच फिर एक बार बन जाएगा साई समर्थ टीम के लिए, लेकिन ये ओवर काफी मायने रखेगा क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, बैटिंग पावर प्ले का ओवर। और इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी सिर्फ जाएंगे गेंद लेकर आने के लिए, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर और चौके के साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए साई समर्थ टीम के। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 49 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में दूसरे विकेट के लिए, और ये खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं मैदान पर। शेखर के गेंद के ऊपर एक शानदार चौका लगा, पावर प्ले का इस्तेमाल किया और एक चौका अर्जित कर दिया। 50 पर पहुंचा है टोटल। अब कितने रन आगे निकलेंगे? ओ ये तेज रफ्तार कर एक, लेकिन बाहर विकेटों से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। शायद सीधा पेविलियन हो जाता, कमेंट्री बॉक्स होता तो हम बता सकते गेंद कहां टिप्पा गिरा और गेंद कहां की तरफ निकले, लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर ये बार बार देख सकते हैं। शेखर फिर एक बार निकलते हुए और इस बार उठा कर खेला है। क्या इसमें दूरी है? ऊपर तो बहुत चली गई है, लेकिन दूरी जितनी चाहिए पूरे आधा डजन रन। टोटल पहुंचा 57 रन स्कोर बोर्ड पर। ये मैच टर्निंग ओवर रहा, शायद कहने वाली बात तो जरूर है, लेकिन ये पावर प्ले अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 11 रन निकले हैं, एक वाइड, एक चौका, एक छक्का। और फिर एक बार वाइड, दूसरी वाइड इस ओवर की, और एक सिंगल निकलेगा। यह दबाव होता है हमेशा गेंदबाज के ऊपर, जब बड़े शॉट निकल आते हैं थोड़ा सा दबाव बन जाता है, क्योंकि जो पहले 4 ओवर में गलती नहीं करी थी वो गलती अब मात्र होती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी थोड़ी सी सुस्तीली नजर आ रही है।
फिर एक बार, इस बार कवर के ऊपर से पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद थोड़ी सी डांसिंग एरिया में, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 60 रन पर। 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। छठा ओवर है प्रगति पर, यानी कि लगभग ये मुकाबला शायद 70 के ऊपर का होने का आशंका। फिर एक बार पीछा करना चाहो, फिर एक बार गेंद निकली, इस बार बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और जिस तरह से रन रेट यहां पर बरकरार रखा है, शायद इसी तरह की बल्लेबाजी होती रही तो 80 का आंकड़ा यहां पर निश्चित रूप से पार कर सकती है साई समर्थ की टीम। अगर 80 का आंकड़ा यहां पर पार हो जाए तो साई समर्थ के पास अच्छी गेंदबाजी है, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाली एस स्ट्राइकर्स की टीम में अच्छी बल्लेबाजी है, प्रोफेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं, और शायद मैच सुबह से हमने पूरे एक तरफे देखे हैं। ये मुकाबला शायद कांटे का होगा। शायद बातचीत हो रही है कि शायद गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज जो कि तो बॉलर रवि रवि आए नए गेंदबाजी के मोर्चे पर। 6 ओवरों का खेल समाप्त, 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, और यहां से अब 12 गेंदों का खेल बाकी। ये महत्वपूर्ण है, 12 गेंदे। स्लो ओवर 1 डिलीवरी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले, अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ इट्स वाइड। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 61 पर 61। इस बार कवर के ऊपर से खेला, 1 बाउंस। टोटल पहुंचा 65 65 रन पर। शायद थोड़ी सी रफ्तार पकड़े है टोटल ने, जो पहले 4-5 ओवर में कम रन बने थे उसका पूरी भरपाई करने वाला ओवर रहा वो छठा, और उसके बाद इस ओवर में एक बाउंड्री। स्लोअर 1 डालने की कोशिश, लेकिन इस बार काफी बाहर, वाइड का इशारा। इस ओवर की दूसरी वाइड डाली है रवि ने, और अब टोटल जो कि 66 रन 66। अच्छी साझेदारी इस दूसरे विकेट के लिए तुषार और बाबल के बीच में। फुल टॉस गेंद, ये हवाई फायर, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, यहां पर खिलाड़ी था वहीं पर ढूंढ लिया। शायद इस शॉट को चाय पीते अखबार पढ़ते उसके बाद भी स्ट्रोक लगा देते तो गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाते, लेकिन इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं तुषार आउट झालो। थैंक यू। एक शानदार बारी देखने को मिली, 32 रन बनाए अपने पारी में तुषार नार्वेकर ने। शानदार बारी को अंजाम दे दिया, आउट होकर पहले वापस, और नए बल्लेबाज सूरज मैदान पर दाखिल होते हुए। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अब तो अंदर जा चुके, शायद बल्ला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अंपायर कह रहे हैं पहले आते समय आप बल्ला ले आ जाते। अब यहां से बची हुई गेंदे पर सूरज आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं जरूर, लेकिन हार्ड हिटर बल्लेबाज की जगह उनके कद जरूर छोटा है, लेकिन कारनामे बहुत बार अच्छे अच्छे कर चुके हैं। आरवी कोरगांव के ओर से बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, ढेर सारे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं। अब यहां से देखना है, रवि को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन एक चौका भी निकला इस ओवर में, 2 गेंदे वाइड भी डाल चुके हैं। 66 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। आपको 35 मिनट में अपने 8वां ओवर स्टार्ट करना है। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर एक बार चूके आते आते उतना आसान नहीं है।
और एक डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। जिस तरह से 2020 में हम अक्सर 19वें ओवर की बात करते हैं, वो 19वां ओवर काफी महत्वपूर्ण है, उस तरह से 7वां ओवर 8 ओवर के मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण। थोड़े से फंबल हो गए, गेंदबाज थोड़े से वापस जाना मुनासिब समझा अंपायर के, और हमारे अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ डेड बॉल का। ये स्लोवर वन, ये तो इसको तो नहीं बख्शेंगे। गेंद निकले सीमा रेखा पर, इट्स अ मैसिव सिक्सर। साथ साथ हमारे और एक करीबी दोस्त दत्तराज गांव यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। उनके टीम का मुकाबला दोपहर के दूसरे सेशन में आपको देखने को मिलेगा। आगे निकले, इस बार खेल दिया कवर के ऊपर से, पीछा किया जा रहा है। पहला रन शायद पूरा होगा, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया। शायद और तेजी होती तो खतरे की घंटी बज जाती। टोटल पहुंचा 73, 73 रन स्कोर बोर्ड पर। यह फाइटिंग टोटल अब बन चुका है। जिस तरह से गेंदबाजी है यहाँ पर सही समर्थ के पास, लेकिन ए स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी भी तगड़ी है। यह आमना सामना अच्छा होगा दूसरी इनिंग में। लेकिन ये रवि का ओवर, उसके बाद एक ओवर, कितने रन बनेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, लो ओवर फुल टॉस थी, निश्चित रूप से मौका था, शायद उठाकर खेल लेते, इंतजार थोड़ा करते तो शायद चौका निकल जाता। एक रन और खाते में जुड़ा। एक रन के साथ साथ ओवर समाप्त, 7वां, 7 ओवरों का खेल समाप्त। 74 रन टोटल, 74। और यहाँ पर इस आखिरी गेंद के ऊपर शायद रिव्यू लिया गया है, जो कि कमर के ऊपर है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देख रहे हैं अंपायर, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर इस गेंद का रिप्ले। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, शायद यहाँ पर निश्चित रूप से देखा जा रहा है किस तरह से, क्योंकि हर एक रन महत्व होता है, हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखना है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं रिप्ले इस गेंद के लिए। थर्ड अंपायर यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से गेंद निकली है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। शायद इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि गेंद आई थी जरूर कमर के हाइट से, लेकिन जब बल्लेबाज के पास पहुंची तो लगभग घुटने के पास। सही मायने में अंपायर हमारे काफी वहां पर चुस्त है, निगाहें काफी गड़ी है, इसलिए उन्होंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन इट्स अ फेयर डिलीवरी। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही था। 74, 74 रन, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज शुभम। ओ ये अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर के ऊपर। ओ वाइड, देखा समझा परखा, उसके बाद इस गेंद को वाइड डिक्लेयर कर दिया है। अतिरिक्त 1 रन, 75 पर पहुंचा है टोटल 75। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 2 बड़े शॉट सही समर्थ के लिए आवश्यक, 4 अच्छी गेंदें। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, नीचे खुद कर निकाला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर
मिड ऑन की दिशा में जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन और खाते में लिखा जाता। टोटल पहुंचा 76, 76 रन स्कोरबोर्ड पर। ये मुकाबला अच्छा होगा क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी टीमें, दोनों टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। 4 ओवर में पहले बांध कर रखा था, लेकिन उसके बाद बेड़ियां तोड़ी है बल्लेबाजों ने। आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का जिस तरह से संपर्क होना चाहिए था वो उस तरह से हुआ नहीं। और एक सिंगल 1 रन के साथ टोटल 77 रन 77 पर पहुंचा है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल शेष, और 4 गेंदों में साई समर्थ के चाहते होंगे कि 10-12 रन निकल आए तो अच्छी सोने पे सुहागा होगा। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इससे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। लेकिन इस बार बल्लेबाज हो चुके हैं आबाद। गेंद निकली 6 रन के लिए और टोटल पहुंचा 83। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार, डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। थैंक यू डीजे। गेंद आ चुके वापस मैदान में, वापस आ चुके हैं गेंद और 83 पर पहुंचा है टोटल 83। यानी कि जिस तरह से सामने वाली टीम में गेंदबाजी है, लेकिन उससे बेहतर यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। बाबल जोरे 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। 32 रन बनाए तुषार नार्वेकर ने। फिर एक बार, इस बार हटकर खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। अभी भी इस ओवर की शायद 2 गेंदों का खेल बाकी है। इनिंग के आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। 83 रन तो बन चुके हैं, यानी कि एक फाइटिंग टोटल इस मैदान पर बन चुका है। सुबह से हमने देखा। फिर एक बार चकमा दे दिया। यहाँ पर शायद सैक्रिफाइस करेंगे विकेट, लेकिन स्ट्राइक पर सूरज आ चुके हैं और आखिरी गेंद का सामना करेंगे। न्यू बैटर जरूर आएंगे, लेकिन अगर वाइड ना गेंद गिरे तो उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलेगा। क्या शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी, स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और आज का पहला दिन और ये मुकाबला देखिए। ओ यार कर लेंगे गेंद, इस बार खोद कर निकाला। मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल तो जरूर लेंगे, दूसरे के लिए पलट रहे हैं। रनआउट जरूर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 2 रन काफी महत्वपूर्ण। इस 2 रन के साथ यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त होते हुए टोटल पहुंचा है 85 रन। जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता, 86 रन रिक्वायर्ड इन 8 ओवर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला होगा। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सीधी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, उसको संडे के लिए मौका मिलेगा, और जो हारेंगे उसका तो पैकअप हो जाएगा। देखना है कौन सी टीम करते हैं टेकअप और किसका हो जाता है पैकअप। ले चलते हैं दूसरी इनिंग में हरीश काकोडकर के साथ, सुनते हैं डीजे का सुमधुर संगीत।
मातशे बॅट्समॅन मातशे बेगीन येयात. बॅट्समॅन प्लीज कम फास्ट. The target of 86 runs, 85 is scored by team Sai Samarth. 86 is required for 8 strikers to enter into the semi-finals. फुडले टीम जी मॅच खेळटली सातेरी महालक्ष्मी आणि गणपती वॉरियर सेकंड सेशनाची रिक्वेस्ट करता. दोन्ही कॅप्टन मातशे जातीतले बेगीन हांगा येयात. कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन आपले टीम शीट्स आणि जे आमी प्लेयर्स खेळटले तांचे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. सो ते मातशे टीम्स कॅप्टन मातशे हांगा रजिस्टर करात जे 11 खेळटले ते. आणि समतेच बॉल सिलेक्ट करपाचे. सातेरी महालक्ष्मी आणि गणपती वॉरियर्स हांची नेक्स्ट सेशनाची पयली मॅच जातली. कॅप्टनाक दोगांक रिक्वेस्ट करता मातसो बेगीन यो. सती महालक्ष्मी तुवें वर्सीस गणपती वॉरियर्स ही जातली नेक्स्ट मॅच. टॉसाक आपयता. कॅप्टन्स मातशे बेगीन टॉसाक येयात आणि तुमची टीम शीट आसा ती हांगा रजिस्टर करात. ताज्या फुडली मॅच जातली सती महालक्ष्मी तुवें आणि गणपती वॉरियर्स जातकीच ती मांद्रेम बॉयज आणि AM क्रिकेटर्स हांच्या मदीं. सो रिक्वेस्ट करता मातशे बेगीन करात प्रोसिडिंग्स. 2 जावन 10 मिनटां जाल्ली आसात. सो आमी रिक्वेस्ट करता मातशे बेगीन करात मॅचीची सुरवात. So Namdev to start. Please make it fast. Yes, get set go, says the umpire. A run chase of 86 runs to see our first semi-finalist. Ravi Ahire and Shubham Cherke, the same openers. Goes for the big one. He felt that it was the ball that was in the arc. Namdev plays for team Asnora in Panchayat level tournaments. A very good bowler. Sati Mahalakshmi of Thue, captain, is requested to come fast here. This is the call going to captain of Sati Mahalakshmi of Thue. This is nicely played. This is in the air and is out. The fielder was placed in the deep. He wanted to go above that fielder. And now first big blow in the very first over without a single run being put on board. 0 for 1.
This time, Sati Mahalakshmi gets a single, gets off the mark the team total. What a big wicket that Ravi Ahire is a big player. So if you can get rid of without scoring anything, I think the job has been very well here by Namdev. This time also might be a catch. This might be the second wicket. And catch taken. Sai Samarth are doing a fabulous job. Shubham Sherke, who was the player of the match, just departs, giving catch once again to the straight fielder in that mid-wicket region. Back-to-back big blows. Both the openers depart. Oh, this will be an easy run out. Oh, unlucky there. This could have been easy run out. He was halfway mark onto the wicket of 22 yards. He had to return back at just a poor throw, giving a big respite here to ace strikers. They are panicky at the moment. They are really panicky at the moment. Just the one on the board. They have already lost 2 wickets. They could have lost the third one as well. We have seen the bowling unit of Sai Samarth. They were so good in defending 85. And once again, and it's out. If it was not taken in the previous ball, it's taken this ball. Third wicket back in the pavilion in the very first over. Namdev strikes 3 big blows and 3 big wickets are going back in the pavilion. There is not going to be any review for the outside edges, inside edges. So umpire's decision is going to be final and binding. So there goes the third wicket at the score of 1. And it's looking very weak here and grim here for a team A strikers. This is the last call to Sati Mahalakshmi Thuye, team captain. Captain of Ganpati Warriors has already recorded and registered the name of the players and waiting for the toss. This is the last call to Sati Mahalakshmi Thuye, team captain. जर तुम्ही आता लास्ट कॉल म्हणल्यार येना जाल्यार टॉस डायरेक्टली हँड ओवर करतले आमी गणपती वॉरियर्साक फॉर दॅट डिसिजन. जर तुम्ही आता येना कॅप्टन सती महालक्ष्मी तुयेचो जाल्यार आमी टॉस जो आसलो तो फोरफीट करतले ओपोजीट टिमीच्या कॅप्टनाक. So in comes Arvind. So Arvind is going to go against the batter Vaibhav. So Vaibhav looks to be a big hope here. If anyone can resurrect them from the graves, it's going to be this man. That guy's got the power and he can play on both sides. The ball is fairly new. It has not been played for big shots. So you can see the top layer of that ball, the rubber ball, is still intact. And mostly it remains intact through the 8 overs because of the lush green fields here on this ground. Now it is 86 is looking like more than 100 runs at the moment
with 3 wickets being taken by Namdev in the very first over. This was a slower ball. Lickett tried here, just getting the singles, just getting the feel now. So moving slowly at the moment, the scoreboard at a snail's pace, 3 for 3. Rocked back immediately in the first over. Will be on the back foot. That's a good ball. A very good delivery here. Deception at its best. Went for the drive. He was not there fully. Still went ahead. So very good smart bowling here from Arvind. This was once again short. This was kept slightly low. It was to be pulled away for 4 or 6. Still the bowling power play over is intact, and if you have taken 3 wickets in the very first over without taking the bowling power play, I think advantage will be there for side Samarth. Once again, going for the big one, just getting an inside edge towards the backward square leg region for a single. And the bowling has been very, very good, just like the first match. They are not conceding any extras. They are bowling on a tight leash, on a tight channel, which is not going to be easy for the batters to go for the big ones. This is a better shot. This is a good shot. Shuffled across, waited for that short ball, pulled it away and scooped it away over the fine leg region for 6. They require this 6 badly, and they got it from the bat of Ranjit. So it's 10 for 3 in 2. So it's 10 for 3 after the end of 2. They are still having a long discussion, and there will be, if the time slot allotted by the umpires doesn't fit, then there will be penalty given to the fielding unit. So all the time calculations have been noted here by the umpires. Ganpati Warriors captain, please come for the toss. Captain of Ganpati Warriors, captain of Sati Mahalakshmi Thue is waiting for you. So he has arrived and the team has come requesting the captain of Ganpati Warriors, please come for the toss. Oh, that's a big strike. This is a big and a huge 6 from the big man Vaibhav. So back-to-back 6s, 1 in the last over, 1 the start of the third over. So Vaibhav, instead of going across the mid-wicket region, he went straight, which is a much better option that he chose to go with a straight bat. So ball is requested to be checked here because there is a little water across that field. I think it's okay. So Sarvesh, left arm medium pacer bowling from round the wicket. This is once again, this might be the second 6 going out of the ground. It clears the field.
3 sixes, hat-trick of sixes, one hit by Ranjit and two back-to-back from the bat of Vaibhav. Well, this is tennis cricket at its best. It can shift its swing within no time. Within 1 hour, you can see the tides being turned. Short ball. This is magnificent batting. This is powerful and outrageous batting from Vaibhav. This is turning out to be a big and expensive over. Hat-trick here from Vaibhav. Two straight down the ground, one at above the head of the bowler, one at the long off region, one in the mid-wicket region. That was a short ball. So he's choosing his options right here. This time nicely played. This is sensible batting here. Very sensible batting. This was not a... So it was time for the toss for the next match, the first match of the second section. This is an expensive over, 19 runs coming off it. It can still be counted for more, just a single. GA 11A 2784 ही गाडी ब्लॉक करता फाटली गाडी काडपाची आसा सो GA 11 2784 ही गाडी जी आसा मातशी ओनरान मातशी सायडीन काडची. Sam straight shot and fielded very nicely by Suraj Gavde, who is fielding at the long off region. But a magnificent over here. 21 runs coming off this over, and it's 31 for 3 in 3. Meanwhile, that news out from the toss arena. Toss won by the captain of Sati Mahalakshmi Tue and electing to field first against Ganpati Warriors. So now, if anyone had felt that this match was going into the kitty or into the half of Sai Samarth, this is the quarterfinals. They got this is all India level tournament. Panchayat and municipality, you can expect 5 top players. Certainly are the top 5 batters in any of the teams. But when you are taking some of the good all-rounders, some of the good batters, some of the good bowlers who can also bat a bit, they are there in your side, and you can consider this is a strong tournament. They might bat somewhere around 7 or 8 as well. In spite of losing 3 wickets, they are not afraid to play their shots, Vaibhav, and also getting the returns. Now is going to be the bowling power play. 4th over. If not taken in the 3rd over, 4th over becomes the normal options here, obviously taken here by the umpires. Namdev, the man who has done the damage at the top, is here to bowl. This is nicely timed. There was a fielder in the deep. Lucky it didn't go towards the hands. Namdev has been the pick of the bowlers who struck the big atom bombs in the first over itself, taking 3 big wickets. And that is what kept them at the backstage. So now it's going to be Ranjit. Ranjit has already shown his 6 hitting capacity with 1 big one. Going for the switch feed and missed here by the batsman, missed here by the keeper, missed here by the short third man, and a boundary rope is crossed by the ball. 4 runs.
That was indeed a magnificent ball, actually. Right, perfect Yorker. He saw the batsman going for the switch it, bowled it down the leg side as an Yorker, fired it down, and the keeper could not collect that ball, and also no chance for the short third man region. They have not kept the shot fine leg. So 4 byes, valuable runs here for 8 strikers. This time just played down the ground, can get a single. So they are at least milking away with the runs. They are that 4 runs were very lucky that came in the form of byes against Namdev, who is bowling decently at the moment, not conceding any loose balls. Vaibhav will be on strike, the big hitter. Oh, this is nicely bowled. He could not. He may be thinking that was a leg spinner, so he left it all alone. The ball was maybe a googly bowled by the bowler. That came back in, could not pick it from the hands. Lucky to survive. This time in the air, but going inside out over the extra cover region. Might be getting the second run. This is a good throw from the deep. Second taken easily here by Vaibhav and Ranjit. 2 runs taking the score to 39. So now this is looking much better here for this team. They are getting it back. हांव रिक्वेस्ट करता सती महालक्ष्मी तुवें ह्या टिमीक तुमी मातशें सकयल देवा तुमची टीम कारण फोटो काडपाचो आसा टिमीचो. सो आमचो ऑफिशियल फोटोग्राफर अमानी इव्हेंट्स बद्री राविल्लो आसा. This time down the leg side. So 1 added to the total score, moves on to 40. They are chasing 86 and halfway mark. They have reached the 40-run barrier. Still 46 more runs required. But if Vaibhav stays on the wicket, which is exactly Ranjit is telling me, you are the key. You need to stay on the wicket. Till the time you are there, there will be worry for the 5th or 4th bowler. This time nicely cut away, up and over the point region fielder. Might get just a single. They will not risk his wicket in the form of run out. A good recovery by the fielder from the point region. Just restricting the batters to a single. This is a great game of cricket. Nobody would have thought after being a rock bottom in the very first over with 3 wickets being taken by Namdev, this team will come back so strongly. They have kept them in the race, kept alive, and halfway mark, 4 overs gone, 41 for 3. 45 runs required in the next 24 balls. 45 is more required in 24 balls. So match is even Stevens. Till the time Vaibhav and Ranjit are there on the wicket, especially that man Vaibhav was hit hat-trick of 6s in that 1 over that was costly over of Sarvesh. So if he is there, I think there will be no respite for the bowlers of Sai Samarth. They will still feel uncomfortable, patchy. And here is the batting power play that has been chosen. And maybe the right option when you have got the good batters out at this point of time is the best option to be chosen. And they have got their good bowler Arvind to bowl that over. So now halfway past is more 45 runs and is going to be Jai Bhosle for his expert updates in Hindi. धन्यवाद हरीश सर. अरविंद नेमड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर, क्या वो टर्निंग पॉइंट ओवर आज सर्वेश का, जिस ओवर में 21 रन निकले और वहीं से यहाँ पर रफ्तार पकड़ी है रनों ने, और साथ साथ एक कैच भी नामदेव बानावली करके गेंदबाजी के ऊपर हाफ चांस था लेकिन वो छूटा, और वहीं से ये जोड़ी शायद मैच को लेकर उड़ जाएगी. शायद यही अंदिशा इस मैदान से बाहर से. ओ इस बार देखिए खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया इस खतरनाक बल्लेबाज को. अरविंद नेमड़ेकर के खाते में और एक विकेट निकलता हुआ चौथा. एक बड़े टोटल का पीछा कर रही है ये टीम ए स्ट्राइकर्स की.
जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए, 86 रनों का लक्ष्य रखा है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। 41 रन पर 3 विकेट, पहले ओवर में 3 विकेट निकले थे। उसके बाद एक शानदार साझेदारी देखने को मिली 40 रनों की ये दोनों के बीच में। और वैभव अब मात्र आउट होकर पहल में वापस 26 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दे दिया। 3 छक्के उनके उस पारी में और न्यू बैटर मैदान पर। धनंजय जो कि मैदान पर ओ आते आते बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे। धनंजय भिंताड़े ये इनका नाम है। एक आक्रामक ढांचे का बल्लेबाज है और साथ साथ एक रन और लिखा जाएगा वाइड के साथ, अतिरिक्त रन के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 42 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच बनेगा, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका। एक विकेट जरूर ज्यादा गवाया है अगर ए स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो। ओ ये स्लोवर वन डिलीवरी, थोड़े से यहाँ पर निकलना चाह रहे थे रंजीत, लेकिन मना कर दिया। शायद देखने वाली बात होगी, अंपायर के पास जरूर मांग कर रही है रनआउट के लिए, क्योंकि बीच में आए थे ऐसा खिलाड़ियों का मानना। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है। रेफर हो रहा है और आप दिल की धड़कन सुन रहे हैं और इट्स नॉट आउट, यानी कि वो अपना विकेट बचाने के लिए भाग रहे थे, जानबूझकर बीच में नहीं आए थे। ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पर रिप्ले से। और निश्चित रूप से शायद थोड़ा सा निकल चुके थे काफी तेजी के साथ रंजीत रन लेने के लिए, लेकिन बाकी सहयोग नहीं दिया धनंजय ने, क्योंकि धनंजय जानते हैं यहाँ पर विकेट नहीं खोना है। रन तो बनेंगे जरूर, लेकिन धनंजय भिंताड़े एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। बड़े बड़े प्रतियोगिता में बड़े बड़े छक्के उनके बल्ले से हमने कई बार देखे हैं और आज वो एक पारी उनको मैदान के अंदर खेलनी पड़ेगी। साथ साथ अरविंद नेमड़ेकर मैन फ्रॉम सावंतवाड़ी, शानदार गेंदबाजी अब तक इस ओवर में करता हुआ। और इस बार हवा में खेल बैठे, शायद कैच का मौका, लेकिन गेंदबाज और एक फील्डर के बीच में नो मैंस लैंड में गेंद निकली। थोड़ा सा फंसा दिया था इस बार जाल में, लेकिन खुशकिस्मत रहे, कैरी नहीं हुई वहां पर। एक रन और खाते में, एक रन के साथ 43 रन ये टोटल स्कोर बोर्ड पर। आधा फासला अब तय हो चुका है, आधे रन अब बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। आधे और रन और बनाने हैं, क्योंकि 86 रन पीछा करना है। एक कीर्तिमान होगा अगर ये 86 रनों का पीछा आसानी से करती है ये स्ट्राइकर्स की टीम इस मैदान पर। अरविंद निम्बड़ेकर और इस बार सामना करेंगे रंजीत, जो अब तक सिंगल बनाकर खेल रहे हैं। वो थोड़े से बैकफुट पर चले गए, खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, शायद रनआउट करना चाह रहे थे। बहुत ही शानदार थ्रो था, एक विकेट की तलाश जरूर है उनकी टीम के लिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक रन और खाते में लिखा जाएगा और एक रन के साथ साथ 44 रन, 44 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेट। 5वां ओवर है प्रगति पर। इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। वो 12 गेंदें काफी मायने रखेगी और उससे पहले वो 7वें ओवर में कितने रन देती है सामने वाली टीम। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये तो भाई था शायद तोहफा था। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर। जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो निकलता हुआ धनंजय के बल्ले से। और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए ए स्ट्राइकर्स टीम के 50 रन बन चुके हैं और अभी 36 रनों की आवश्यकता है। शायद पहले ओवर में जिस तरह से विकेट निकले, पूरा एक तरफा सा लग रहा था मुकाबला, लेकिन वैभव की शानदार बल्लेबाजी और अब धनंजय की। ओ ये अच्छी गेंद थोड़े से आगे डाली थी, इससे पहली गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज के रडार में थी, ये गेंद थोड़ी सी दूर थी। डॉट गेंद के साथ ओवर की हो चुके समाप्ति। 50 रन, 5 ओवरों का खेल समाप्त। 18 गेंदों का खेल बाकी है और 36 रनों की और आवश्यकता। ये मुकाबला प्रति ओवर 12 के औसत से रन चाहिए। इस
प्रतियोगिता की अगर बात की जाए 8 ओवर के मुकाबलों में आपको 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 3 गेंदबाजों को 2-2 ओवर डालने का मौका दिया जाता है। साथ साथ यहाँ पर 35 मिनट में आपका 8वां ओवर शुरू होना चाहिए, वरना आपको वो गो पेनल्टी जो कि आईपीएल के में जिस तरह से दी जाती है, 2 खिलाड़ी 1 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर, और साथ साथ ये जो डगआउट के सामने रेखा बनाई गई है ना, वो आउट होने वाला खिलाड़ी जो वहां तक चलते आना चाहिए। बीच में अगर रुक जाए तब भी 2 रन की पेनल्टी मिलेगी, और साथ साथ उस रेखा को पार करने से पहले नया बल्लेबाज अगर अंदर नहीं आया तो भी आपको पेनल्टी मिलेगी। पांच ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 50 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी के लिए सत्येंद्र ये गेंदबाजी के मोर्चे पर। पिछले मैच में 3 विकेट इसने चटकाए थे, वो सत्येंद्र यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये ओवर इससे ये ओवर और 7वां ओवर काफी मायने रखेगा। रणजी स्ट्राइक पर है, एक छक्का आपने देखा, धनंजय के बल्ले से एक चौका भी देखा, लेकिन अब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम बहुत बाकी है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए, एक थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, अगर एक लॉन्ग ऑफ कवर पर तैनात खिलाड़ी, एक मिड ऑन पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक पॉइंट पर, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है। शायद ये फील्ड की सजावट। अठारह गेंदे 36 रन। ओ इस बार देखिए तेजी बत्ती गेंद में, बल्ले के साथ गेंद निकले डीप स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा पर, 4 रन के लिए। इस चौके ने काम कर दिया। पहले ओवर के इस ओवर की पहली गेंद पर चौका निकला, टोटल पहुंचा 54। कहीं ऐसा ना हो जाए आम के आम और गुटली का दाम, शायद इस तरह की बात बन ना जाए, क्योंकि आपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाए, बाद में पछतावा आपको करना ना पड़े। लेकिन बल्लेबाजी अच्छी है रंजीत अब, और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी इनके बीच में। 4 रन तो अर्जित कर दिए है पहले गेंद पर, अब आगे 5 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर की। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखिए, ये भी गेंद देख लिए डीप थर्ड मैन सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज, महत्वपूर्ण चौका। थैंक यू। क्रिकेट में उल्टा फेर होते हुए देर नहीं लगती। एक आध ओवर जो आपने पकड़ बनाई रखी थी, वो सर्वेश के ओवर ने उस पकड़ को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और वहां से ये रन का टेम्पो, रन का रफ्तार आगे बढ़ता हुआ अब टोटल पहुंचा 58 रन पर। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता। ओ ये क्या स्ट्रोक है, हवाई फायर, डी स्क्वायर लेग पर बैठक स्ट्रोक, 6 रन के लिए। थैंक यू। 3 गेंदों में आ चुके हैं 14 रन, मैच पलटा मारता हुआ। मैंने पहले कहा 6वां और 7वां ओवर काफी परिणामकारक होगा इस मुकाबले के दौरान, और यही यहाँ पर देखने को मिला। 3 बड़े शॉट निकले हैं, और अब शायद मैच फिर एक बार रोमांचक के ऊपर खड़ा हुआ। रंजीत के बल्ले से निकला एक शानदार स्ट्रोक, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक। इस बार शायद लगी नहीं बल्ले को, शायद जहां खेलना चाहते थे वहां पर निकली नहीं गेंद। अंपायर का शायद जो कि अंपायर के ध्यान था वहां पर कि पॉपिंग क्रीज से बाहर निकले या नहीं। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, लेकिन इस ओवर का काम तो हो चुका है। प्रति ओवर 12 के औसत से आपको रन बनाने थे, इस ओवर में अब तक 14 रन आपने अर्जित करे हैं। अभी भी 2 गेंदे शायद इस ओवर की बाकी है, मैच बनेगा, मैच में मजा आ जाएगा। ओ ये अच्छी गेंद, निश्चित रूप से सिंगल तो जरूर निकलेगा। तेजी के साथ आए, रन आउट करने की कोशिश, कवर बैकअप, केदार का दमदार वहां पर।
एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 65 रन, 21 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार यहाँ पर निकल आएंगे, ये महंगा और साबित होता हुआ, और जो कि अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज धनंजय भिंताड़े, मैन फ्रॉम शिरडी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक करी है। निकल रहे गेंदबाज, ओ अच्छी गेंद, सम्मान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, क्योंकि इस ओवर का काम पूरी तरह से हो चुका है और अब खेल समाप्त हो चुका है। 6 ओवरों का 12 गेंदों का खेल, अभी भी बाकी 21 रनों की आवश्यकता। ये देखिए, हम अल्टी पल्टी शॉट की बात करते हैं, लेकिन 12 गेंदे और 21 रन, ये आंकड़ों का खेल है। 12 गेंदे 21 रन, ये ओवर महत्वपूर्ण। जिस तरह से T20 में 19वां ओवर महत्वपूर्ण माना जाता है, 5 ओवर में चौथा, 5 ओवर के मुकाबले में चौथा ओवर महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह 8 ओवर के मुकाबले में 7वां ओवर निर्णायक माना जाता है। इस ओवर में अगर रन बने, मैं तो कहूंगा इस ओवर में 10 रन भी निकल आते तो आखिरी ओवर में और मैच आ जाएगा। और गेंदबाजी के लिए शायद मेरे ख्याल से सर्वेश फिर एक बार नजर आते हुए, वही से उनका ओवर था और वही से फिसलता हुआ ये मुकाबला। 12 गेंदे 21 रन, मैच जिस तरह से बनना चाहिए था वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, केदार की दमदार फील्डिंग फिर एक बार नजर आते हुए, और एक रन खाते में लिखा जाएगा। अब यहां पर विश्लेषण देखिए, 11 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रनों की और आवश्यकता। 11 गेंदे 20 रन, वही 21 रन उस सर्वेश के ओवर में, उसकी भरपाई करने वाला ये ओवर हो सकता है, शायद कसौट भरी गेंदबाजी हो, लेकिन सामने कौन है देखिए, धनंजय भिंताड़े। ओह, माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ शॉट। चलिए जाइए देखकर आइए, ये आधा डजन रन, 6 रन। थैंक यू। हम यूं ही किसी की तारीफ किया नहीं करते, इन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, इनका खेल हमने बहुत बार देखा है, बार बार देखा है। छक्का निकला इस बार मैदान पर। इस बार निश्चित रूप से मैनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, निश्चित रूप से यहाँ पर एक रन जरूर निकलेगा। मोहित की सांसें थोड़ी सी अटक गई थी, इस छक्के ने वो सांसें छूट गई है। जिस तरह से वो छक्का लगाना, हवा से बातें करता हुआ, और उमेश के क्या कहने, सर्वेश का ये और भी महंगा नजर आ रहा है। फिर एक बार अब टोटल जो कि पहुंचा है 73, 13 रन की आवश्यकता है। ओ इस बार हवा में खेल बैठा, कैच की संभावना, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट निकला। रणजीत के रूप में मैच ने फिर एक बार कांटा बदला है, करवट बदली है। विकेट नंबर 5 वापसी करते, क्या यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच में? फिर एक बार ट्विस्ट डीज है। न्यू बैटर समी मैदान पर, और देखिए धनंजय के जर्सी का नंबर देखिए 7। समी को यहां पर अब रनों की जो कमी है ना, उसे पूरी करनी पड़ेगी। हर दर्द का इलाज हमारे पास मौजूद है आनंद जी, और लफ्ज का भी। चलिए सर्वेश निकले गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार खेला हवा में, फिर एक बार, शायद ये कैच लेना चाहिए था, शायद आपने हाथ आए मौके को छोड़ दिया है। इसको कहा जाता है पहले से ही मंदी, और उसमें आटा गिला हो जाएगा।
टोटल अब पहुंचा है 74 रन, 74, 12 रनों की आवश्यकता। धनंजय देखिए सोच रहे हैं बड़े शॉट के साथ मैच को समाप्त किया जाए। 7 नंबर की जर्सी उनके शरीर के ऊपर है। बेस्ट फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड इन क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। ओ ये देखिए उठा दिया, क्या कहा, क्या कहा, क्या सुना, गेंद कहा। देखिए मैंने कहा ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगा, छक्का निकला। टोटल अब पहुंचा 80 पर, सिर्फ 6 रन की है आवश्यकता। सर्वेश ये आपने क्या कर दिया। अगर मालवणी में कॉमेंट्री होती ना तो मैं कहता करूक गेलो संकासूर आणि झालो तयार नरकासूर। ये 2 ओवर ना भाई आपके हाथों से मैच लेकर उड़ने वाले। 6 रन की आवश्यकता। क्या शॉट था आनंद, ये शॉट बार बार देखने को मन कर रहा है। देखिए हवा से बातें करते हो ऐसा नहीं, और 70 के माध्यम से ये शॉट आपको बार बार देखने को मिलेगा। भाई ऐसे मुकाबला बार बार देखने को नहीं मिलता। 6 रन की है आवश्यकता। क्या शॉट है, शॉट है। एक खिलाड़ी सेना बराबर, इसे कहते हैं मारा कम और घसीटा ज्यादा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर। अब शायद सोच रहे होंगे वो सर्वेश का पहला ओवर क्यों दिया गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बद्री, बाद में पछतावा करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। विराज आए हैं गेंदबाजी के लिए, और जो कि पेनल्टी यहां पर लग चुके हैं। एक खिलाड़ी जो कि और अंदर आएगा। 6 रन की आवश्यकता। ओ चलिए चलिए चलिए, टाटा गुड बाय। इस प्रतियोगिता को टाटा कर दिए आपने। देखिए ये क्या कर दिया। ये 2 ओवर सर्वेश क्या है ना, ये पूरी तरह से पलट दिया है इस मुकाबले को। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में बाकी नहीं। चलिए फिर एक बार डीजे के और